Namaste, everyone. Welcoming you all to this episode 8 of Dengue Defence, a holistic webinar which will be discussing on holistic approaches to protect your family. So it will be an interactive webinar. It's brought to you by DAV Prashasti, Voluntary Health and Wellness Initiatives of the DAV Group Chennai and the Ari Samaj Foundation. We'll be going multilingual, English, Tamil and Hindi. அனைவருக்கும் வணக்கம். இது DAV பிரசஸ்தி வழங்கும் டெங்கு டிஃபென்ஸ். எப்படி நம்ம குடும்பத்தை ஹோலிஸ்டிக்கா, அதாவது பல்வேறு மருத்துவ முறைகள் மூலமாவும் எப்படி நம்மளோட ஃபேமிலியை ப்ரொடெக்ட் பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த வெபினார். நேஹா மேம், ஐ ரெக்வெஸ்ட் யூ டு tell about this webinar in Hindi and that it will be an interactive one. Yes मैम, नमस्ते, आप सबका स्वागत है इस वेबिनार में जिसका नाम है डेंगू डिफेंस। यहाँ पे हम आके एक होलिस्टिक तरीके से, दैट इज नेचुरली आप घर पे क्या कर सकते हैं, आप मन के लिए क्या कर सकते हैं, और सारी जानकारी डेंगू को लेकर हम इस वेबिनार में प्रस्तुत करेंगे। हम इस वेबिनार में तीनों भाषाओं में इंग्लिश, तमिल और हिंदी का प्रयोग करेंगे। थैंक यू। Thank you. So I am Dr. Preeti. I am a dentist and a cell regenerative medicine specialist. I am a volunteer for the DAV Prashasti initiative. I'm an alumnus of DAV. With me, we have Dr. Amuda Varshini, who is a naturopathy practitioner. She's also an alumnus of DAV. She'll be speaking on the naturopathy for dengue treatment and prevention. And we have Mrs. Neha Bhartwaj. She is a psychological counselor and medical coordinator for the Medical Guidance Initiative. She'll be speaking on psychological wellness and immune health to combat dengue. நாங்க 3 பேர் பேசுவோம். டாக்டர் பிரீத்தி, நான், டாக்டர் அமுத வர்ஷினி, மிஸ்ஸஸ் நேஹா. அதுக்கப்புறமா நம்ம ஷார்ட்டா நாங்க பேசி முடிச்ச அப்புறம் क्वेश्चंसக்கு வில் ஓபன். நேஹா மேம், एक बार ये सेशन हो जाएगा, मतलब हम पहले आपको बताएंगे हमारी जो भी जानकारी है, उसके बाद आप लोग के जो भी सवाल है उन लोगों का जवाब हमारे डॉक्टर्स और हम आपको देंगे। थैंक यू। Thank you. So first, it's a disclaimer. This is only for educational purposes. So please consult a healthcare professional for any medical concerns. When I will stop in between for Neha ma'am to translate to Hindi, I'll be going Tamil and English. Dengue. We all call it in India as dengue. The actual pronunciation is dengue. In fact, some people pronounce it dengue, but the actual pronunciation is dengue. நம்ம எப்படி அதை சொல்லணும்னா டெங்கேன்னு தான் சொல்லணும். பட் நம்ம ஊர்ல எல்லாரும் டெங்கு அப்படின்னு சொல்லி பழகிட்டதால நானுமே டெங்குன்னு தான் இந்த வெபினார் மூலமா ஃபுல்லாவே சொல்லுவேன். இட்ஸ் கால்ட் டெங்கு இன் ஆர் வெபினார். ஓகே, ஸோ டெங்கு ஃபீவர் இஸ் அ ட்ராபிக்கல் இல்னஸ். அப்படின்னா ட்ராபிக்கல் கண்ட்ரீஸ், இந்தியா, மலேசியா, ட்ராபிக்கல் வெதர் இருக்கிற countries-ல dengue fever is very common. Worldwide now it is spread, where 3.9 billion people of the 7 billion population are at risk. 7 billion populationல 3.9 billion are at risk. ஒரு வருஷத்துக்கு 98 to 400 million people affect ஆவாங்க. ஒரு வருஷத்துல there will be 98 to 400 million people affected. Majority of the cases will be asymptomatic or mild. யாருக்கெல்லாம் இன்ஃபெக்ஷன் வருதோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் ஃபுல் ப்ளோனா ஃபீவர் எல்லா ப்ராப்ளமும் வரும்னு கிடையாது. சில பேருக்கு எந்த சிம்டமுமே இல்லாம மைல்டா இருக்கும். டெத்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு உலகம் பூரா பார்த்தா 20,000 to 40,000. இட்ஸ் தி நம்பர் ஆஃப் டெத்ஸ் வித் டெங்கு வேர்ல்ட் வைட். அண்ட் இட் இஸ் காஸ்ட் பை அ வைரஸ். டெங்கு ஒரு வைரஸ் மூலமா வர இன்ஃபெக்ஷன். The virus name is dengue virus, dengue சொல்வாங்க. There are 4 subtypes. dengue 1, 2, 3 and 4. 4 வகையான டெங்கு வைரஸ் மூலமா இது வரலாம். ஒரு வைரஸ் மூலமா வந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு தடவை வந்ததுன்னா யூசுவலா இந்த dengue 1 and 2 அந்த dengue 1 and 2 ஆல திரும்ப வராம இருக்கலாம். When you are affected by one subtype, there might be lifelong immunity, but the other subtypes may affect you. But மத்த dengue virus types உங்களை affect பண்ணலாம். So it is caused by the bite of Aedes aegypti mosquito. இந்த மஸ்கிட்டோக்குள்ளதான் அந்த வைரஸ் வாழும்.
அந்த infected mosquito நம்மள கடிச்சதுன்னா நமக்கு டெங்கு வரும். Neha ma'am would request you to give it in brief in Hindi. यस मैम। सो जैसे मैम ने बताया कि पूरे दुनिया में हर साल करीबन 90 से 400 मिलियन लोग अफेक्ट होते हैं इस डेंगू से। ये डेंगू को हमारे देश में डेंगू करके कहा जाता है, लेकिन बाकी के देशों में और इंग्लिश में अगर आप देखें तो इसे आके डेंगी कहा जाता है, लेकिन हम इसे डेंगू ही कहेंगे क्योंकि हमारे भारत में हम इसे डेंगू के नाम से ही जानते हैं। तो काफी सारे केसेस डेंगू के आते हैं लोगों को, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलता क्योंकि सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। सिर्फ कुछ केसेस में सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और जितना ज्यादा इसको बताया गया है कि डेंगू आ गया तो बहुत ज्यादा जानलेवा है, ऐसा नहीं है। 400 मिलियन लोगों में से केवल 20,000 या 40,000 लोगों की ही डेथ हुई है, तो ये काफी कम प्रतिशत है। और डेंगू ये आके एडिस इजिप्टी नाम के एक मच्छर से फैलता है। सो मच्छर में भी कई सारे प्रकार के मच्छर होते हैं, जिसमें से केवल ये एडिस इजिप्टी, और उसमें भी सिर्फ मादा फीमेल एडिस इजिप्टी से ही ये फैलता है, और ये एक वायरल डिसीज है। तो ये मच्छर के अंदर ये वायरस रहता है, और जब वो मच्छर हमारा खून पीता है तो वो खून में ये वायरस आ जाता है। तो ये 4 तरह के वायरस हैं, डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3 एंड डेनवी 4। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स में से यूजुअली अगर आपको एक टाइप का आए, जैसे डेनवी 1 से अगर एक बार डेंगू आए तो आपका शरीर इससे पूरी तरह से इम्यूनाइज्ड होता है, आपको वापस एक बार डेनवी 1 से नहीं आ सकता, लेकिन आपको डेनवी 2, 3 या 4 से आ सकता है, और यही दूसरों के लिए भी लागू करता है। Thank you ma'am. So as I said, it is when a infected mosquito bites a human, then the virus enters the human, then it will be staying in the body for 3 to 14 days, after which it will replicate inside the cells, and then it becomes a full-blown infection. Meanwhile, the virus stays in the mosquito throughout its lifetime, and it will be replicating inside the mosquito again, for which the mosquito needs to feed on the blood of humans. But the mosquito is not affected by the dengue. It just stays inside the mosquito. Only humans and some non-human primates are affected by the dengue. The dengue virusங்கிறது மஸ்கிட்டோ உள்ளுக்குள்ள போனோடனே மஸ்கிட்டோ கடிச்சதுன்னா, ஒரு இன்ஃபெக்டட் பர்சனை கடிச்சதுன்னா அதுக்கு பிளட் வேணும். எதுக்குன்னா அந்த பிளட் இருந்தாதான் அதால முட்டையிட முடியும். சோ அந்த பிளட்டை குடிக்கும் போது நமக்குள்ள அந்த வைரஸ் வந்துரும். அந்த வைரஸ் வந்து நம்ம உடம்புல 3 ல இருந்து 14 டேஸ்க்கு அங்க வாழும். அதுக்கப்புறமா அது இன்னொரு இன்ஃபெக்டட் பர்சன்ல இருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு அது போய் கடிக்கும் போது அவங்க பாடிக்குள்ள போயிடும். மஸ்கிட்டோவுக்கு டெங்குவால எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஹியூமன்ஸுக்கும் சில நான் ஹியூமன் பிரைமேட், சில மங்கி அந்த மாதிரிக்கு மட்டும் தான் இந்த டெங்கு இன்ஃபெக்ஷன் வரும். நேஹா மேம். सो डेंगू ये जो ये मच्छर के अंदर यूजुअली पनपता है। तो मच्छर को, जब मच्छर के अंदर डेंगू होता है तो मच्छर को डेंगू नहीं होता है। हम ये सोचते हैं कि ठीक है, ये मच्छर के अंदर ये डेंगू वायरस है तो शायद उसे भी डेंगू होगा। नहीं, मच्छर को ये डेंगू नहीं होता है। लेकिन मच्छर के अंदर जब ये डेंगू होता है तो वो डेंगू कंटिन्यूसली पलता रहता है, तो उसे पालने के लिए मच्छर को खून लेने की जरूरत पड़ती है हमसे। तो जब वो मच्छर हमसे खून लेता है तो ये डेंगू के जो वायरस हैं ये हमारे रक्त में चले जाते हैं, और एक बार ये हमारे रक्त में चले गए तो 4 से 7 दिन तक इन्हें आके दुगना तिगुना होके फिर जाके हमारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो इस तरीके से डेंगू जो है वो हमारे अंदर पनपता है। तो पहले एक इंसान को डेंगू क्या बोलते हैं, एक मच्छर के अंदर डेंगू वायरस होता है, वो जाके एक इंसान को काटता है, फिर उसके बाद आके 4 से 7 दिन के बाद वो इंसान को वो लक्षण दिखने लगते हैं, लेकिन वो 4 से 7 दिन वो डेंगू उस इंसान के अंदर होता है। और इसी तरीके से मच्छर के अंदर भी 8 से 10 दिन तक ये डेंगू वायरस पनप सकता है। So these symptoms, I think it will be common in all languages. So what are the symptoms of dengue? See, it will be like any viral infection. First, fever. So once fever is there, you should not worry that it's dengue. But what are the other signs? There will be pain behind the eyes. There will be headache, especially behind the eyes. Then there will be stomach pain, continuous stomach pain in some people. And these symptoms will differ between each person. There may be fever and there will be a rash. I mean, nowadays, most of the dengue people get this characteristic rash, like red flat patches.
There will be bone and joint pains usually, but it will be very severe in dengue in some people. There will be, when there is vomit, there may be frequent vomiting, but when you have vomiting in blood, or when you have vomiting in, when you have blood in stools, or you have bleeding in gums, or extreme tiredness, extreme weakness, then it's a symptom of severe dengue. You should be going to the hospital. So these are, and drowsiness may also be there. These symptoms will be there for some people, will not be there for some people. சில பேருக்கு இந்த symptoms இருக்கும், சில பேருக்கு இருக்காது. So if earlier dengue, when we test is after 3 days of fever, but nowadays when you have these severe symptoms in the beginning itself, because 3 to 14 days the virus is already inside your body. So if you get these symptoms on the first or second day itself, you can go for a blood test. So nowadays doctor advise second day test itself. 1 in 20 people develop severe dengue, and among those 5% may go for severe hemorrhagic shock. அதாவது 20 பேருக்கு அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா அதுல ஒருத்தருக்கு தான் சிவியர் டெங்கு வரும். அதுலயும் சில பேருக்கு தான் வந்து இந்த ஹெமரேஜிக் ஷாக், ஏன்னா டெங்கு பிளேட்லெட்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ நீங்க டெங்கு இன்ஃபெக்ஷனோட போனீங்கன்னா என்னென்ன டெஸ்ட் எடுப்பாங்க அப்படின்னா, NS1 அப்படிங்கிற ஆன்டிஜன் எடுப்பாங்க. அந்த டெங்கு வைரஸ் மேல இருக்கிற ஒரு புரோட்டீன். they'll take for test for NS1 antigen, IgM ஆன்டிபாடி, IgG ஆன்டிபாடி. அதாவது வைரஸ் உள்ள வந்தோடனே நம்ம பாடி வந்து இந்த ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ NS1 பாசிட்டிவா இருந்ததுன்னா, if NS1 is positive, you are in the acute phase of infection. Infection வந்து உங்களுக்கு 1 to 3 days இல்ல 1 to 7 days குள்ள தான் இருக்குன்னு அர்த்தம். IgM, NS1 பாசிட்டிவ் வரும், IgM பாசிட்டிவ் வந்ததுன்னா it is like you are within the 7 days of infection. 7 days of fever onset, acute illness. IgG, if it is positive, but NS1 and IgM are negative, it means long, munadi appiyo vanduchu. So this is for the doctors to test. You don't bother. They will do NS1 antigen, IgM, IgG. When it is positive, they will decide about the course of illness. Doctors வந்து இந்த NS1 antigen, dengue IgM, IgG antibodies test பண்ணுவாங்க. So temperature 40 degrees Celsius ங்கிறது 104 Fahrenheit. நம்ம thermometerல it will go up to 104. There will be clinical issues in some people, as I said, because platelets are affected. Dengue virus will hit your immune system, will bring down your blood count, especially the platelets. Platelets are needed to stop bleeding in our body. Whenever we get injury, platelets are needed to stop the bleeding. So when platelets go down, there will be internal bleeding and there will be loss of plasma. That is why people go to shock. டெங்குல இந்த ஷாக்குங்கிறது பாடி ஷாக், வால்யூமிக் ஷாக்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது டெங்கு வந்தவங்களுக்கு பிளேட்லெட்ஸ் குறைய ஆரம்பிக்கும். அது 10,000க்கு கீழெல்லாம், யூஸ்வலா 1.5 to 3.5 lakhs வரைக்கும் பிளேட்லெட்ஸ் இருக்க வேண்டியது படிப்படியா குறைஞ்சி ஒரு 10,000 போச்சுன்னா அவங்க சிவியர் ஷாக்குக்கு போயிடுவாங்க. ஏன்னா பிளேட்லெட்ஸ்ங்கிற அந்த செல் தான் Preeti ma'am, we are not able to hear you. I think Preeti ma'am ki Preeti ma'am oda network issue edho irukku, because of which I know, I think we have lost her for a few seconds. So till then I'll just explain avanga enna sonnangangiradhu. So usually initially pehle agar aap dekhe, so though Preeti ma'am is back. Yeah. Ma'am, you are on mute again. About the platelets alone, you can explain in Hindi as you can. यस मैम. सो पहले सब आके डॉक्टर दूसरे दिन में ही डेंगू के समय टेस्ट करने के लिए बोलते थे, लेकिन आजकल डॉक्टर कहते हैं कि 5 से 7 दिन तक रुक जाते हैं और उसके बाद डेंगू के टेस्ट करते हैं. तो जब ये डेंगू के टेस्ट किए जाते हैं तो मेनली IgG और IgM, ये 2 चीजों को देखा जाता है और उसे देख के डॉक्टर समझते हैं कि अभी आपको डेंगू, मतलब आपको कौन सी स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में है, मतलब पहले बार आया है, दूसरे बार आया है, या कुछ दिनों से ही है और अभी काफी उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं, क्या है कैसा है, वो आके इसी टेस्ट से पता चलता है. तो इस टेस्ट का नाम आके क्या बोलते हैं मैम, इफ यू कैन गो टू द प्रीवियस स्लाइड. नो, थैंक यू.
सो आपको यूजुअली एक 5वें या 7वें दिन आके ये वाला डॉक्टर्स आपको ये टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। और एक बार डेंगू आता है तो ये मेनली हमारे ब्लड सिस्टम को अफेक्ट करता है, हमारे ब्लड्स को अफेक्ट करता है, रक्त को अफेक्ट करता है, रक्त सारे कम हो जाते हैं। और उसमें भी सबसे मेन तरह का जो रक्त है वो है प्लेटलेट, जो आके हमारे इम्यूनिटी को, हमारे रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है। उसे सबसे जाके पहले जाके ये वायरस अटैक करता है और उसे कम कर देता है। Thank you, ma'am. So then what is there for treatment of dengue? Still, there are no antiviral drugs. It's only symptomatic. Symptoms தான் ட்ரீட் பண்ணணும் டெங்குல. சிம்டம்ஸ் என்னன்னா நமக்கு ஃப்ளூயிட் லாஸ் இருக்கும் பாடியில. ஏன்னா அந்த பிளேட்லெட்ஸ்லாம் குறையறதால பிளட்ல இருந்து வெளியில ஃப்ளூயிட் வந்து நம்ம பாடிக்குள்ள கலெக்ட் ஆகும். ஸோ அதுக்காக தான் நிறைய தண்ணி குடிக்கணும், நிறைய ஃப்ளூயிட்ஸ். யூ ஹேவ் டு ட்ரிங்க் லாட் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ், ஓஆர்எஸ், ஹெர்பல் டீஸ், இனஃப் ரெஸ்ட். தென் ஓவர் த கவுண்டர் மெடிசன் பாராசிட்டமால் மட்டும்தான் சாப்பிட முடியும். ஒன்லி பாராசிட்டமால் இஸ் அலவுட். அசிட்டோமினோஃபென்ங்கிறது பாராசிட்டமால். மத்த பெயின் கில்லர்ஸ், பாடி பெயின் இருக்கே அப்படி நான் பெயின் கில்லர் யூஸ் பண்ணலாமான்னா நோ. ஏன்னா இட் வில் ரிஸ்க் த இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ப்ளீடிங். ஸோ இபுப்ரூஃபன், ஆஸ்பிரின் இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. நோ பெயின் கில்லர்ஸ், ஒன்லி பாராசிட்டமால். And once the doctor will tell you whether you need to get admitted or not. If the doctor says to get admitted, please get admitted for dengue, because it is nowadays a very life-threatening illness for some people. டெங்கு வந்து நம்ம வந்து டாக்டர் அட்மிட் ஆக சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பா அட்மிட் ஆகணும். ஏன்னா அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல உங்களுக்கு ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ் கொடுக்கறது மூலியமாவும் பிளேட்லெட்ஸை மானிட்டர் பண்ணிட்டு 10,000 கீழே போச்சுன்னா பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் கொடுப்பாங்க. அதுக்காக தான் அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆக சொல்றாங்க. ஸோ as I said, ஒன்லி பாராசிட்டமால் சாப்பிடலாம், பெயின் கில்லர்ஸ் சாப்பிடக்கூடாது. ஏன்னா ரிஸ்க் ஆஃப் ப்ளீடிங் இருக்கும். டாக்டர் சொல்லாம சாப்பிடக்கூடாது. டாக்டர்ஸ்க்கு தெரியும் என்ன கொடுக்கலாம் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு. மஸ்கிட்டோ பைட்ஸை அவாய்ட் பண்ணணும், அது வந்து ரொட்டீன், அதெல்லாமே பேசுவாங்க. பெட் ரெஸ்ட் நல்லா எடுக்கணும். தென் ஈட் ஃபுட்ஸ் லைக் பம்கின், கேரட், ஸ்பினாச், நல்ல ஹெல்த்தி பிளேட்லெட் கவுண்ட் பண்றதுக்கு டாக்டர் அமுதா will be speaking on the naturopathic remedies. And in severe cases you will need medical care in the hospital. And why can't we use antibiotics? Because it's a viral infection. பாக்டீரியாக்கும் வைரஸ்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா, வைரஸ் நம்ம செல்குள்ள போய் it will take over our cell machinery and use it for reproducing itself. So நம்ம வைரஸ்க்கு எதிரா ஒரு மெடிசனை கொடுக்கணும்னா it has to kill our cells. That is why you can't use antibiotics to treat viral infections. There are antivirals which are being developed but nothing in the market. And regarding vaccines also, there are 2 vaccines, but they're all for viral because it gets mutated often and it's got severe side effects. It's not being used. So at the moment, we have no treatment except for supportive treatment. But why do we need a strong immune system is, why this time of supportive treatment in the 3 ல இருந்து 10 நாள் டெங்கு வந்த அப்புறம் எதுக்காக டாக்டர் சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா, உங்க இம்யூன் சிஸ்டம் திரும்ப ஃபைட் பேக் பண்றதுக்கு, பிளட் செல்ஸ்லாம் குறைஞ்சாலும் இம்யூன் சிஸ்டம் ஃபைட் பேக் பண்றதுக்கு, இந்த சைட்டோகைன் ஆக்டிவிட்டிலாம் ஏத்துறதுக்காகவும், அந்த அடாப்டிவ் இம்யூன் சிஸ்டம் கண்டுபிடிச்சு ஃபைட் பண்றதுக்காகவும் தான் we need a strong immune system. And டெங்குவோட சிவியாரிட்டி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அ பேஷண்ட்ஸ் இம்யூன் சிஸ்டம். ஒரு இம்யூன் சிஸ்டம் வீக்கா இருந்ததுன்னா டெங்கு வந்ததுன்னா அவங்களுக்கு சிவியரா வரும். இம்யூன் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுன்னா டெங்கு வந்தாலுமே ஏசிம்டமேட்டிக்கா இருப்பாங்க. Ma'am, this alone I want Neha ma'am to explain, and then we can move to the next speaker, ma'am. Yes, ma'am. So, ma'am, if you can show the previous slides, ma'am. Yes. Okay. तो जैसे मैम अभी बता रहे थे कि डेंगू इस बीमारी के लिए आज तक किसी तरह की एक दवाई बनी नहीं है। तो कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो आके डेंगू के लिए खासकर बनी हुई है। लेकिन हम डेंगू को डॉक्टर्स आके सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं। सिम्टोमेटिकली मतलब जैसे आपके सिम्टम्स दिखते हैं, आपको बुखार है, सर्दी है, खांसी है, तो उसके लिए ही आपको केवल दवाई दी जाती है। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको डेंगू है और आप अभी तक डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, तो आप आके शुरू कोई दवाई लेना चाहते हैं तो केवल पैरासिटामोल ले सकते हैं और कोई दवाई नहीं ले सकते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। आपको एक डॉक्टर को दिखाना होगा, उनसे एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लेना होगा और बाद में ही आप बाकी की दवाइयां ले सकते हैं। डेंगू के समय कई बार जोड़ों का दर्द होता है, शरीर का दर्द होता है और हमें लगता है कि हमने कोई पेन किलर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। पेन किलर्स लेना काफी हानिकारक हो सकता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है।
तो डॉक्टर से दिखाए बिना पैरासिटामोल के सिवा और कोई दवाई ना लें। खूब सारा पानी पिए, क्योंकि इस टाइम पे आके काफी पानी का लॉस हो जाता है शरीर से। काफी रेस्ट ले, केवल पानी नहीं, पानी के साथ छाछ पी सकते हैं, फ्रूट के जूस वगैरह पी सकते हैं, जिससे आपके शरीर में पानी काफी हो। इसके अलावा आपको काफी अच्छे से रेस्ट लेना है। बीमारी हुई है तो नहाना नहीं है, ऐसा नहीं है। प्लीज जरूर अपने आप को एटलीस्ट टॉवल गीला करके एक स्पॉन्ज बाथ तो भी दीजिए। और क्या बोलते हैं, कौन कौन से खाना खाना है, नहीं खाना है, ये वाली बात डॉक्टर अमुदा अपने इसमें बताएंगी। और आज तक कोई भी एक एंटीबायोटिक इस डेंगू के लिए करके नहीं बना है। और ये जो एंटीबायोटिक्स है ये केवल बैक्टीरिया पे ही काम करता है, लेकिन एंटीवायरल ऐसा नहीं है। एंटीवायरल जो है ये वायरस एक्चुअली करता क्या है, ये हमारे हमारे जो सेल्स हैं उसके अंदर चला जाता है। तो कई बार ये जो एंटीवायरल है इसमें आके दवाई को हमारे सेल के अंदर जाना पड़ता है, जिससे थोड़े बहुत हमारे सेल्स भी अफेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए इम्यूनिटी पे काम करना काफी जरूरी है, रोग प्रतिकारक शक्ति पे काम करना काफी जरूरी है, क्योंकि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति, क्योंकि हमारे सेल्स को मारे जाते हैं वो वायरस तक पहुंचने के लिए, तो काफी कम हो जाती है। यस मैम। Thank you. So that's all I have to have on. So that is why we are saying dengue is a severe infection, but to fight it, we need immunity and we need to have psychological wellness for a strong mental health, for a strong immunity. Then even if dengue comes, you will not have severe infection and you'll be able to fight it. Now over to Dr. Amuda. Thank you so much, Preeti ma'am. So let me just share my screen. Just a second. Yes, ma'am. Is my screen visible to everybody? And Yes, I'm audible? Yes. Yes. Thank you so much. Yes, so namaste all, very good evening. So now I'll be talking about how we can prevent and treat dengue through naturopathy and yoga. But as Preeti ma'am had already spoken, we do not have any particular treatment, for dengue as such. So whatever I'll be talking about will be ways to improve your immunity. We can generalize it in that way. So once we have a good immunity, the severity of your dengue infection will be much lesser. So I'll be mainly targeting on how to improve your immunity through naturopathy and yoga. And also I would like to put a disclaimer here, like these are just general facts which I'll be talking about. And before starting any of these kind of diet or yoga, which I'm going to be talking about, I would request all of you to either consult a professionally qualified naturopathic doctor and then start with your treatment plan. Yes, so because every body is different, so every particular herbal remedy or every particular yoga pose will have different effects on everybody else, like for everybody. Yeah. So இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராப்பரான குவாலிஃபைட் நேச்சுரோபதிக் டாக்டரை போய் நீங்க பார்த்து ஒரு பர்சனல் கன்சல்டேஷன் வாங்கிட்டு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Okay, so moving on. So just a second. Sorry, I just lost my screen. So first we'll be talking about how we can prevent dengue through naturopathy and yoga. So first will be your herbal remedies. So herbs in the giloy, papaya leaf extract, tulsi, amla, neem, in the madriyana herbs வந்துட்டு நம்ம ரெகுலரா நம்மளோட டயட்ல இல்ல in the form of teas or juices. I'll be talking about that in the next slide. So இந்த மாதிரி giloy, papaya leaf, tulsi, amla, neem, turmeric அந்த மாதிரியான herbs எல்லாம் நம்ம ரெகுலரா நம்மளோட டயட்ல inculcate பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா it will start improving our immunity. நம்மளோட T lymphocytes, நம்மளோட B lymphocytes, நம்மளோட white blood cells எல்லாமே வந்துட்டு they'll start getting stronger. So once your immune cells are getting stronger day by day, automatically when you combat an infection, it will be easier for your body to recover and get better.
Yeah, and then next are natural mosquito repellents. So நம்மளோட மார்க்கெட்ல கிடைக்கிற mosquito repellents மாதிரியே naturally herbally we have mosquito repellents. Like இப்போ essential oils அப்படின்னு சொல்லுவோம். We call it aromatherapy in naturopathy. So these are nothing but aroma oils like lemongrass, eucalyptus, citronella, tea tree. So இதெல்லாமே வந்துட்டு essential oils. So இந்த oils வந்துட்டு நம்ம either ஒரு room diffuser மாதிரியோ இல்ல ஒரு massage on the skin மாதிரியோ or during our baths we just add 1 or 2 drops of these oils to our water which we take bath with. So அந்த மாதிரி or just normal inhalation of these oils will actually help you repel mosquitoes and will also improve your immunity. So in the oils la irukra and ஒரு strong aroma. Okay, and that aroma is caused by the aroma causing component, phytocomponent, which is present in the oil. Yeah, so the lemongrass we have few components. Eucalyptus we have a component called as eugelene. So in the madriyana components which are present in those oils will actually emit a strong odor. So under order mulama, which is a strong odor for the mosquitoes. So once there is a very strong odor, what happens is the mosquitoes don't come near. So they act as natural mosquito repellents because of their odor. And because of the other components which are present in these oils, they also work as natural immune boosters. So in the oil வந்துட்டு நீங்க ரெகுலரா உங்களோட room freshener மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணி அதை நீங்க ஸ்மெல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதோ or like if you use it as a as a bath மாதிரி நீங்க குடிக்கிற தண்ணியில ஒரு 1 or 2 drops போட்டோ இல்ல நார்மலா நம்ம இன்ஹேல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதோ they can improve your immunity. And we have camphor and garlic. So camphor and garlic வந்துட்டு we can just normally when we burn camphor or when we use garlic, burnt garlic or something, the smell of camphor and garlic will also act as natural mosquito repellents. And garlic la irukra allicin compound will actually improve our immunity. So garlic நீங்க வந்துட்டு உங்களோட foodல நீங்க include பண்ணி நீங்க சாப்பிடலாம், or you can just add it in every dish which you make. If you're making a sambar, you can add a little of garlic to it, or if you can even have like garlic infused water, just soak garlic overnight and then you'll have to drink the water the next day morning. So and the madri, if you start inculcating garlic in your diet, it will improve your immunity. And also the smell of garlic, just raw garlic, you can just place it across in your rooms, just peel off the skin and you can just place it around your room, and the smell of raw garlic will also act as natural mosquito repellents. And the smell of burnt camphor, camphor I think that is karpuram in Tamil. So and the camphor burn panni adla vara and the smell vandittu will also act as natural mosquito repellents. So if you're worried about the components which are present in the market available mosquito repellents, you can always switch to these natural mosquito repellents to keep your mosquito level at bay. Yeah. And then hydration and detoxification. So நம்மளோட bodyல hydration is very, very important. We'll have to have at least 3 to 3.5 liters of water per day for an average adult. Why? Because hydration, it works as a what do I say? ஒரு நம்ம பாடியில இருக்கிற டாக்ஸின்ஸ், தேவையில்லாத பொருட்களை வந்துட்டு வெள்ள தள்ளுற மாதிரியான ஒரு ஆக்ஷன் வந்துட்டு happens only when you are hydrated well enough. And there is also a research which says the more dehydrated you are, the more you are capable to attract these dengue causing mosquitoes, because the dengue causing mosquitoes get easily attracted to people who are dehydrated. They tend to sense it. Okay, so the severity of your infection when you are dehydrated becomes double than when you're well hydrated. So you will always, even during dengue or even before dengue, it is always mandatory that we keep ourselves well hydrated. Hydration in any form, just as Preeti ma'am discussed, in any form. It can be water, it can be fruit juices, it can be electrolytes, it can be buttermilk, whatever it may be, tender coconut water, anything. You will have to keep yourself well hydrated to avoid any kind of infection, not just dengue, but any kind of infection. And hydration is equally important for your immunity as well, because water carries all the essential nutrients which will actually support a stronger cell community. Yeah, for your cells to become stronger, for your cells to act more faster, etc., hydration helps a lot. So always make sure that you're drinking plenty of water to keep yourself hydrated. And detox diet, in the sense, உங்களோட பாடியில வந்துட்டு நிறைய தேவையில்லாத பொருட்கள் இருக்கும். We call it toxins in naturopathy. So in the toxinsனால what happens is, the more you keep having lots of
junk food or processed food or more sugar or more like something which is not needed by the body, what happens is there's this accumulation of toxins which happens. So தேவையில்லாத பொருட்கள், சத்து இல்லாத பொருட்கள்லாம் வந்துட்டு நம்மளோட பாடியில அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அக்யூமுலேட் ஆக 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 என்ன ஆகும்னா we call it inflammation. So inflammation is nothing but the start of any kind of infection or any kind of disease. So இந்த inflammation அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு ஒரு root cause of any kind of disease or any kind of your body is more prone to diseases if you are inflamed inside. We call it toxemia. Mia means inflation and toxi means toxins. So toxins accumulate ஆகிறதுனால வரக்கூடிய ஒரு கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் toxemia. So இந்த மாதிரியான detox diet அப்படின்னா என்னன்னா நிறைய whole fruits and vegetables நம்மளோட டயட்ல நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்ரி மீல் லைக் பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னர் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பவுல் ஆஃப் ரா சாலட் யூ கேன் ஹேவ் இட் like along with your main meal. Like say now I'm having like 3 idlis with some chutney and sambar for my breakfast. I can cut down 1 idli. I can have 2 idlis with a little of sambar and little of chutney, and then I can add a small bowl of fruits or a small bowl of vegetables. It can be any kind of vegetables, but preferably raw. முடிஞ்ச அளவுக்கு பச்சையா சாப்பிட்டா நல்லது. ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் என்ன ஃப்ரூட்ஸ் பிடிக்குமோ, சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் த பெஸ்ட் டு இம்ப்ரூவ் இம்யூனிட்டி. ஸோ அந்த சீசன்ல என்ன ஃப்ரூட் அவைலபிளா இருக்கோ அந்த ஃப்ரூட்ஸ் யூ கேன் ஹேவ். Or if you prefer any kind of fruits like oranges or apples or whatever you like it, you can actually include it. So for breakfast, lunch and dinner, make sure that we have a small portion of raw fruits and vegetables so that you also have a detox component in your main meal. Yeah, so in the madriyana fruits and vegetables, we'll have to start including in our diet. And then lastly, again, proper diet and nutrition. So antioxidant and anti-inflammatory foods. In the antioxidant foods, nothing but whatever I've discussed. Your detox diet is actually an antioxidant diet. So எந்த அளவுக்கு நம்ம whole fruits and whole vegetables raw-வா எடுத்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு antioxidants நம்ம பாடியில increase ஆக ஆரம்பிக்கும். So in the antioxidant and anti-inflammation also. So whole நம்ம எப்பப்பெல்லாம் சாப்பிட ஸ்டார்ட் பண்றோமோ அப்பெல்லாம் வந்துட்டு we'll have a more of antioxidant and anti-inflammatory properties. And foods rich in quercetin. Quercetin it's a component. Okay, so that will also help you in fighting or like improving your immunity. Quercetin is very important for improving your immunity, for strengthening your immune system. So அது எதுல மெயினா இருக்குன்னா நம்மளோட apples, onion and broccoli. Green colorல cauliflower மாதிரியே இருக்கும், that is broccoli. And then apples and onion, it can be pink onion or white onion, any kind of onion. Even apples, it can be normal red apple or green apple, whatever it is. All the apples, onions and broccoli varieties have quercetin in them. So you can start including these in your diet a little so that you get this component in better amounts. Neha ma'am, I would request you to just give a gist of this in Hindi ma'am, and then we can proceed to the next slide. यस मैम. सो जैसे अभी मैम बता रहे थे कि आपने आके कुछ चीजों का सेवन डेंगू होने के पहले से ही शुरू करना है. ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है डेंगू आने के बाद ही हम अपने आप को सुधारेंगे, नहीं. पहले ही हम आके कुछ चीजों को अगर खाना शुरू करें तो हम डेंगू को पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं. तो उसमें से सबसे पहले है कुछ हर्ब्स, कुछ जड़ी बूटी. गिलोय, आप सबने नाम सुना होगा. गिलोय का जूस भी मिलता है दुकानों में. आप ये गिलोय को अपने खाने में एक सब्जी के तरीके से भी यूज कर सकते हैं. फिर पपाया के जो पत्ते होते हैं, आपके घर के पास अगर पपाया का पेड़ है तो उससे वो पत्ते को निकाल के अच्छे से साफ करके उसका एक जूस बना के भी आप पी सकते हैं. या फिर आजकल दवाई उससे एक दवाई के फॉर्म में भी कई सारे आयुर्वेदिक दवाइयों में दुकानों में मिलती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आंवला हमेशा ही आपके शरीर के विटामिन सी को बढ़ाता है, जो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति यानी इम्यूनिटी के लिए काफी जरूरी है. इसके अलावा नीम भी. आप सब जानते हैं कि जब भी हमारे भारतवर्ष में नव वर्ष होता है तो हम आके नीम के पत्तों का सेवन करते हैं. छोटे छोटे जो छोटे वाले नीम के पत्ते होते हैं उसका सेवन करते हैं. नीम के फूल को आके यहाँ पे दक्षिण भारत में आके उसका एक तरह का रसम वगैरह बनाया जाता है. तो इन चीजों का इस्तेमाल अगर आप हर बार अपने खाने में करते रहें तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है. इसके अलावा आजकल आप जानते हैं कि दुकानों में कई सारे मच्छर को भगाने के लिए रेपेलेंट बोला जाता है, मतलब मच्छर आपके पास ना आए उसके लिए कई सारे से मस्कीटो रेपेलेंट, मच्छर को भगाने वाली चीजें हैं. लेकिन ये सारी जो है ये सिंथेटिक चीजों से बनी हुई है.
तो आप नेचुरल चीजों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लेमन ग्रास। हम आके उसे चाय पत्ती नहीं, चाय में डालते हैं, लंबा लंबा सा होता है, उसे लेमन ग्रास करके कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं, वैसे यूकलिप्टस ऑयल, नीलगिरी का तेल, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। सिट्रोनेला और टी ट्री करके ये दो है, ये आपको कोई भी आयुर्वेदिक दुकान में या खादी ग्राम में मिल जाएंगे। इसके अलावा अपना जो कपूर होता है, कापूर जिससे हम आरती करते हैं, उसे भी आप शाम के समय 3-4 जगह पे अपने घर में जलाएं, तो अपने आप मच्छर आपके घर में कम हो जाएंगे। अगर आपके घर में क्या बोलते हैं, गार्लिक, लहसुन का इस्तेमाल होता है, तो आप एक लहसुन को एक बैग में डाल के अलग अलग जगह पे भी लटका के रख सकते हैं, इससे भी मच्छर काफी कम हो जाते हैं। लेमन ग्रास, नीलगिरी ऑयल, सिट्रोनेला, टी ट्री, इन सारे ऑयल्स के इस्तेमाल से आपके घर में मच्छर का प्रभाव कम हो जाएगा। इसके अलावा जैसे प्रीति मैम ने भी कहा, अमुधा मैम भी वही कह रही है कि आपके शरीर में काफी पर्याप्त पानी होना चाहिए, तो पानी खूब पीजिएगा, और खासकर वो सब्जियां और फल खाइए जो आके डिटॉक्स मतलब हमारे शरीर में कई बार यहाँ वहां पे न अनचाही चीजें फंसी हुई रह जाती है, हमारे खून में रह जाती है, हमारी किडनी में रह जाती है, इसे टॉक्सिन कहा जाता है। और इसे निकालने के लिए कई सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो हम आगे बताएंगे, तो वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको खाने से ये जो टॉक्सिन्स हैं ये निकल जाएंगे, और आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बेहतर हो जाएगी। और खासकर कुछ सब्जियां जो है वो क्योरसिटिन नाम की एक चीज उसमें मिलती है, मतलब उन सब्जियों में क्योरसिटिन ये होता है, और ये होने की वजह से आपकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, मतलब इन टॉक्सिन्स को निकालने की प्रॉपर्टी है, वो काफी अच्छी हो जाती है। और ये क्यूरसिटिन किसमें मिलता है? ये मेनली आपको एप्पल, चाहे वो लाल रंग का हो या हरे रंग का हो, आपका कांदा, चाहे वो पिंक कलर, लाल लाल या गुलाबी रंग का कांदा, या सफेद कांदा हो, या छोटा कांदा हो, उसे प्याज भी कहते हैं, प्याज हो, तो उसमें, और ब्रोकोली करके एक सब्जी है, इन तीनों में क्योरसिटिन काफी मिलता है। Thank you, ma. Yes. So we had seen giloy juice, papaya leaf, turmeric, etc. So, idellame vanditte how can we consume? How can we inculcate this in everyday life? So, first thing is we can have giloy. We'll talk about giloy. So, giloy in the form of juice, powder, tea, and we also get giloy capsules in the market. So, the giloy juice, how we can prepare is you have giloy stems. So, these giloy stems, you will have to crush them. You'll have to extract the juice. You'll have to strain it, and then you can add a little bit of lemon, and you'll have to drink it once a day. So, the arachi juice and the juice, you can add lemon or water, and then you will have to drink it. Drink giloy juice. Giloy powder giloy stems sunlight dry பண்ணிட்டு then you will have to grind them into a powder. ஒரு பவுடரா நல்லா அரைச்சிட்டு அத warm water அப்படி இல்லாட்டி honeyல mix பண்ணா you will get a semi solid kind of paste. So அந்த paste you will have to have it once a day. Yeah, so giloy powder, you'll have to dry the stems in sunlight, grind them into a powder, mix them with warm water or honey, and then you'll have to have it once a day. And then giloy tea is nothing but you will just have to use the stems, boil them in water for 10-15 minutes, and then you'll have to drink it. You'll have to strain it and drink it. That is also once a day. So giloy tea the stems kutti kuttiya cut பண்ணிட்டு you'll have to நம்மளோட நார்மல் வாட்டர்ல போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணணும், ஒரு 10-15 நிமிஷம் நல்லா பாயில் பண்ணிட்டு அப்புறம் அதை வடிகட்டி குடிக்கணும். So that is giloy tea. And giloy capsules are already available in the market, so that will be prescribed to you by your practitioner. Yeah. And then papaya leaf extract. So in the papaya leaf extract first that is juice. So juice papaya leaves first nalla wash பண்ணிட்டு அத குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி நல்லா அரைச்சிட்டு அவங்கள நல்லா strain பண்ணனும். அந்த leaves நல்லா strain பண்ணி நல்லா புழிஞ்சு எடுத்தோம்னா you will get a good thick kind of extract from the leaves. So on the extract you'll have to mix it with water or lemon or honey. You can use anything, and then you'll have to drink it once a day. And then tea. Juice and tea. Next comes tea. So tea you'll have to boil the leaves in water, same like how we prepared for giloy. That's the same way how we do it for papaya also. So you'll have to boil the leaves in water for 10-15 minutes, again strain and drink them. And we also have, just like we have giloy capsules, we also have papaya leaf capsules. So that the capsules will be prescribed to you by a practitioner.
And then turmeric and other herbs like amla, tulsi, neem. So all these how we can have is turmeric. It can be added along with the teas like giloy tea or papaya tea or tulsi tea or ginger tea, whatever you're having. You can add a little bit of turmeric. And turmeric we also use in our everyday cooking also. So that is also there. Or you can also add a little bit of turmeric to your milk which you're drinking. Just normal milk without adding sugar or anything. Just add a little bit of turmeric, a little bit of pepper powder. Just mix it and drink it like a masala milk. Yeah, so that will also be a good way of inculcating turmeric into your diet. And then amla can be had raw itself. The more raw it is, the more better it is. So amla, you can have like 1 or 2 big amlas per day. You can have 1 amla in the morning, 1 amla in the evening. And then tulsi and neem. So tulsi and neem, again, in the form of teas, you can have it. Or neem, just like Neha ma'am had mentioned, we can, and then வேப்பம்பூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, neem flower. We use rasam. We make rasam with those. So you can have it in that way. Or tulsi also, you can actually boil the leaves for 10-15 minutes in water and strain them and drink them as a tea also. So these are ways in which we can inculcate these herbs into our diet. Neha ma'am, I would request you just a small gist of this, like how we can consume all Yeah, this. sure. So, गिलोय आप किस तरीके से सेवन कर सकते हैं? तो आप गिलोय का जूस बना सकते हैं। वो कैसे बनाना है? गिलोय जो है उसके जो स्टेम टहनी होती है, जो पतली वाली टहनी होती है, उसे लेके उसे अच्छे से आप आके क्रश कर सकते हैं और उससे फिर छान सकते हैं, जिससे आपको वो जूस मिलेगा। उसे आप आके पानी के साथ या फिर अपने नींबू के साथ मिक्स करके दिन में 1 बार पी सकते हैं। आजकल ये जो गिलोय के जो स्टेम है, जो टहनी है, वो आके पाउडर के फॉर्म में ही कई सारे आयुर्वेदिक दुकानों में मिलती हैं। उसे आप लेके गर्म पानी के साथ या हनी के साथ मिक्स करके दिन में 1 बार पी सकते हैं। इसी गिलोय के स्टेम का चाय भी बनाया जाता है। जैसे आप यूजुअली चाय बनाते हैं, उस समय में इसे आप थोड़ा सा डाल सकते हैं या फिर सिर्फ इसे उबाल के इसे चाय की तरह बना के पी सकते हैं, लेकिन इसमें दूध नहीं डालना है। और गिलोय के कैप्सूल्स भी हैं, लेकिन अगर आप गिलोय के कैप्सूल लेना चाहते हैं या चाहे वो पपैया के कैप्सूल हो, आपको पहले एक डॉक्टर से प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब आते हैं पपैया की तरफ। तो पपैया के पत्तों का सेवन कैसे किया जा सकता है? तो सबसे पहले पपैया के पत्ते ले, उसे अच्छे से धोएं, उसे छोटे-छोटे बारीक छोटे-छोटे हिस्सों में काटें, उसे अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड करें और एक छाननी में डाल के अच्छे से उसे स्ट्रेन करके पानी के साथ या फिर नींबू के साथ या शहद के साथ मिक्स करके पी लें। इसका आप आके जैसे हम गिलोय के टहनी का ये बनाते हैं चाय, वैसे ही इसका भी चाय बना सकते हैं। कट करके आप इसे पानी में उबाल सकते हैं 10 से 15 मिनट तक। गिलोय के जब आप टहनी का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको 10 से 15 मिनट तक उसे उबालना है। उबालने के बाद उसे छानना है और आपको उसे डायरेक्टली पीना है। उसमें चाहिए तो आप शहद मिक्स कर सकते हैं। अब आते हैं टर्मरिक की तरह। हमारी हल्दी हल्दी जो है वो आप ऊपर जो गिलोय का चाय बना रहे हैं या पपैया के पत्तों का चाय बना रहे हैं, उसमें भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। उसके साथ आप आके अपना जिंजर जो कहा जाता है, अदरक, उसे डाला जा सकता है। इन चीजों को मिक्स करके आप खा सकते हैं। हल्दी वैसे भी हम लोग रोजमर्रा हमारे खाने में इस्तेमाल करते ही हैं। हम आके अदरक का भी इस्तेमाल करते हैं, अदरक की चाय भी पीते हैं। तो वो अगर आप करते हैं तो उसे जारी रखिएगा। उसी तरीके से आंवला आंवला जो है वो आपने कच्चा ही खाना है। जितना हो सके एक आंवला आपको कच्चा खाना, उसे ज्यादा पकाना नहीं है। तभी हम लोग को उसके अंदर की सारी ताकत मिल सकती है। इसके अलावा तुलसी और नीम। तुलसी तो वैसे भी हमारे भारतवर्ष में हम आते जाते ऐसे ऐसे खा ही लेते हैं या फिर कभी कभी उसका चाय बनाते हैं, है ना? तो उस तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं। और जैसे नीम हम पिछले वाले स्लाइड में ही बता रहे थे कि नीम के जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं उतने कड़वे नहीं होते हैं, तो वो आप खा सकते हैं। या फिर आप नीम के जो फूल हैं उसका एक रसम बनता है, उसे वेपम्बू करके यहाँ पे दक्षिण भारत में कहा जाता है। तो वेपम्बू रसम भी आप बना के पी सकते हैं। यूट्यूब में ये सारे जितने भी नुस्खे बताए हैं उसके वीडियोस हैं, आप आके उसे देख के बना सकते हैं। Thank you, ma'am. So next we'll see yoga. So yoga for prevention of dengue. So basically this is yoga for immunity. I would like to phrase it in that way. So yoga la vandittu we'll see 3 branches. So first is pranayam, then asanas, and then meditation and relaxation. So in the 3 branches mein vandittu they play equally important roles in developing our immune system.
So first is pranayam. So pranayam is very important because they tend to enhance your breathing capacity. They tend to enhance your lung capacity. So the better your lung capacity is, the better the oxygen levels in your body is, and the better, the more better the oxygen levels, the more better it is beneficial for your immunity. So adula pathingana, we'll have Kapalbhati pranayam, Nadi Shodhana pranayam, Bastrika pranayam. So all these are actually Kapalbhati and Bastrika, for example, they involve a fast breath work. So romba fast inhale panni exhale pandra madri irukum. So what happens, like when you inhale fast and exhale fast, you tend to expel out the toxins through your breath itself. So இந்த பிராணாயாம்ல பண்ணும்போது உடம்புல தேவையில்லாத டாக்ஸின்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஃபாஸ்டா பிரீத் அவுட் பண்ணும்போதே அந்த டாக்ஸின்ஸ் வெளியில வந்துரும். And Nadi Shodhana is also called as purification pranayama. So we believe like there's energy in the body. So naturopathy believes in the concept of vitality. So on the energy அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம பாடியில ப்ராப்பரா ஃப்ளோ ஆனாதான் நம்ம பாடி வந்துட்டு ஹெல்த்தியா இருக்கும். So if there are any kind of energy blockages in our body, so what happens is that is the root cause of a disease. Okay, so அந்த energy blockage ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா regular practice of Nadi Shodhana is actually beneficial for removing the energy blockages. So எங்க ஒரு அடைப்பு, எனர்ஜி அடைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு அடைப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நாடி சோதனா டெய்லி பண்ணோம்னா it will actually remove the energy blockages. It will improve the flow of vitality. Same with the asanas also. Surya Namaskar is like your entire muscle groups tend to get worked up when you do Surya Namaskar. Bhujangasana, Matsyasana, Sedubandhasana. So all these are like general yoga poses which will improve your immunity. Meditation and relaxation is also equally important, just like any other physical activity. It's not like you keep doing physical activity, your immunity is gonna improve. So that also is a major part. But relaxation is also a major part to improve your immunity. எந்த அளவுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்றோமோ அந்த அளவுல இருந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு பாதியாவது we'll have to relax our body so that and the exercise or the benefits will actually start to kick in inside our body. So mindfulness meditation. Mindfulness meditation is where you pay attention to whatever is happening inside your body. So we'll have to be mindful. We call it mindful eating na solvanga. Mindful eating na you will have to understand what is inside your plate. So in the plate la na vandittu carbohydrates vechiruken, protein vechiruken, idla vandittu vitamins irukku, idla minerals irukku, idla probiotics irukku. Abdingara madri when we become aware of the things which are inside your plate, that is called as mindfulness. The same way when we meditate, we become aware of what is happening in our body, that is called as mindfulness meditation. Controlling our thoughts, becoming aware of what is happening inside your body, how the energy is inside your body, that is mindfulness meditation. And then we have a practice called as yoga nidra. So in the yoga nidra abdingaradhu vandu again or guided meditation technique madri, you have audios which are available. So and the audios la instructions கொடுத்துட்டிருப்பாங்க. அந்த instructions நம்ம கேட்டு நம்ம அந்த meditation பண்ணோம் அப்படின்னா that is actually proven to relax your body both physically and mentally. It is a wonderful restorative practice. It's a restorative practice. It restores your body of the lost energy. It restores positivity in your body. So yoga nidra and meditation also helps a lot in improving our immunity. Yes. And moving on. Okay. So coming to the treatment aspect of dengue, all those are prevention aspects of dengue. Coming to the treatment aspect of dengue, already we have discussed hydration. So proper hydrate பண்ணி இருக்கணும். dengue க்கு முன்னாடி dengue இருக்கும்போது dengue க்கு அப்புறம் hydration is always very 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 important irrespective of how you are. If you're healthy, if you're not healthy, if you're having some kind of disease or if you're not having any kind of disease, hydration is mandatory. 24/7 you'll have to just keep hydrating yourself. Next is nutrient-rich foods. So dengue irukkumbodhu, when you have foods rich in vitamin C, like citrus fruits, or vitamin K, like leafy green vegetables, and antioxidants-rich fruits, like in the fruits and vegetables, which I've already discussed, raw sapidumbodhu, it can support the immune system. And as Preeti ma'am had already told, it will also support your platelet count. Your vitamin K is actually very important for developing your platelets. So in the vitamin K rich fruits, vitamin C rich foods, and antioxidants are actually very essential when you are suffering from dengue. And then herbal remedies, we already discussed panna, papaya leaf juice, turmeric, and ginger. So in the moonume vandittu will actually help a lot in reducing the dengue severity. Yes, so papaya leaf நம்ம already discuss பண்ண மாதிரி நிறைய ரிசர்ச்ல சொல்லிருக்காங்க. papaya leaf
can increase your platelet counts. So dengue la vanditu first target ஆறுது நம்மளோட platelets. So platelets குறைய ஆரம்பிக்க once we start inculcating papaya leaf juice, it actually helps to increase our platelet counts. Then turmeric also it can be taken as supplement also, or as how we discussed in the last slide. So it also has anti-inflammatory properties. So it is going to reduce the inflammation in your body, thereby improving your immunity. And then ginger Preeti ma'am already discussed panna madri, we tend to have nausea or abdominal pain or some kind of symptoms when we have dengue. So adellame nausea varama thadukkaradhukum, digestion நம்ம சாப்பிடுறத வந்துட்டு ப்ராப்பரா டைஜஸ்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்றதுக்கு this ginger will play a good role. And rest and recovery, this was also discussed by Preeti ma'am. Prioritize sleep and rest. Body heal பண்ணனும் அப்படின்னா நம்ம பாடிக்கு நம்ம அந்த ரெஸ்ட் கொடுத்தாதான் பாடி வந்து ஹீல் ஆகும். பாடியோட ஹீலிங் கெப்பாசிட்டி will improve only when you give proper rest to your body. So you will have to prioritize sleep. Sleep nicely when you're suffering from any kind of disease. Sleep is a restorative activity for the body. So sleep is very, very important. So try and sleep, get good rest, and avoid foods rich in sugar, processed foods, because processed foods and sugar, research says that it can compromise your immune system. So especially when you're in some kind of disease or some kind of infection, the more you have sugar and processed foods, the more it's going to become difficult for your body to heal from the infection. So you'll have to give the proper diet for your body to heal. So you'll have to limit your sugar or avoid sugar if possible when you're on an infection. Avoid sugar and processed foods so that your immune system can work properly. Yes. So Neha ma'am, I would like you to just explain the Sure, second ma'am. and the fourth point, ma'am. Yeah. Sorry, ma'am, the fourth point alone. Second and the fourth point. Second and the fourth point. Yes. तो न्यूट्रिएंट रिच फूड्स, तो जैसे अभी अमुदा मैम बता रहे थे, इसके बाकी के जो हैं जैसे कि पानी खूब पीना चाहिए, ये ऑलरेडी प्रीति मैम ने भी आपको बताया था, वही बात वापस दोहराई जा रही है यहाँ पे। उसके अलावा खाना जो आपके न्यूट्रिएंट्स में काफी रिच है, जैसे कि विटामिन सी, आपके नींबू में, आपके संतरे में, मौसम्बी में विटामिन सी काफी होता है, तो उसका सेवन खूब कीजिएगा अगर आपको डेंगू आता है तो। डेंगू के समय विटामिन के जो आके आपकी हरी पत्तियों के सब्जी में मिलता है, हरी जैसे पालक हुआ, आपकी मेथी हुई, इन सब चीजों में काफी होता है, तो उसका सेवन भी अच्छे मात्रा में कीजिएगा। और ये जो है जैसे कि पिछले वाले इसमें भी बताया गया था, एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके गार्लिक में वगैरह मतलब लहसुन में वगैरह मिलता है, वो इन सब खानों का सेवन करने से आपके शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी और डेंगू के समय उस वायरस से लड़ने में आपको आसानी होगी। इसके अलावा पपैया और टर्मरिक और जिंजर के बारे में ऑलरेडी मैडम ने पिछले वाले स्लाइड में आपको बताया है। तो पपैया के पत्तों से आपका प्लेटलेट काउंट भी बढ़ेगा, टर्मरिक से आपके बदन में सूजन कम होगी, और अदरक से आपके कई सारे टाइम डेंगू के समय उल्टी जैसा लगता है, तो अदरक आके आपको उसमें मदद करेगा और खाने को पचाने में भी मदद करेगा। और सबसे जरूरी बात है, इस समय में आपको नींद ये काफी मात्रा में लेनी चाहिए, अच्छे से सोना चाहिए। अब तभी आप सोएंगे तो आपका शरीर जल्दी जल्दी रिकवर करेगा। और जो खाना एकदम बहुत ज्यादा मीठा है या फास्ट फूड है, केक हुए, पेस्ट्रीज हुए, आपका बर्गर, पिज्जा, ये सब हुआ, वो इस समय में अवॉइड करना है। हमेशा अवॉइड कर पाए तो अच्छी ही बात है, लेकिन खासकर इस समय में अवॉइड करना है। Thank you. Okay. So lastly, yoga for dengue. So dengue la irukumbodhu, if possible, if you're hospitalized, no, we cannot. But if you're at home and if you're at a manageable condition, we have some poses which will actually help your body to relax and restore. So those poses include like Balasana, Viparita Karani, Shavasana. All these are actually relaxation poses. So these poses tend to improve the blood flow is one. At the same time, it will also give you a very good relaxed feeling. So the more the blood flow எந்த அளவுக்கு ப்ராப்பரா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு nutrients, oxygen நம்ம body entire body full circulate ஆகும். And the more better the circulation is, the faster the healing process. So these poses actually aim at proper blood circulation. And these are relaxation poses. And then pranayam la already discuss panna madri nadi shodhana pranayam and ujjayi pranayam nu irukku. All these are again which will be beneficial for reducing the severity of dengue. And then we have meditation like mindfulness or guided meditation, already discuss panna madri. And then we have something called as hydration focused yoga. So abdingiradhu enna poses which will
improve your digestion and your hydration capacity, the cell for your cells to take up water. So for example, we have cat and cow pose. It is also called as Marjorie Asana, which is actually beneficial for both digestion and for improving your cells to take up water. So on the madri, we have different poses which will be prescribed to you by a practitioner. So on the madri hydration focused yoga number inculcate panna start pannitona, it will actually be very beneficial for dengue. So idellame start பண்றதுக்கு முன்னாடி please take in a proper consultation from a professionally qualified naturopathic doctor. Yes, and with this I end with my session. Over to Neha ma'am, please. Thank you. Thank you, Amada ma'am. So, I'll share my screen. So, namaste to one and all present here. So, this is the last part of today's presentation, where we'll be talking about psychological wellness. Matlab, manas or one of the main elements which will help you fight that is, it will increase you. That is, I'm really sorry. Yeah. So let me come back again. So psychology, number manas is one of the important aspects to help us fight any disease and increasing our immunity. Okay. And in the dengue disease, to increase our immunity, there are certain psychological practices which we can follow. And that is what we are going to see in today's last part. So before I go, can you all in the chat box write down whenever you hear about dengue? Now, dengue is very rampant. What are the fears that come to your mind? இப்போ டெங்குங்கிற ஒரு பேரு கேட்டா உடனே உங்க மனசுல என்னென்ன பயம் வருது, என்னென்ன டென்ஷன் வருதுங்கிறத நீங்க chat box ல போட முடியுமா? जब भी आप डेंगू के बारे में सुनते हैं, आप एक तरह का डर मन में आता है, कुछ चिंताएं मन में आती हैं। तो क्या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या बातें आपको इतना चिंता मतलब किन बातों की वजह से टेंशन आता है? What causes anxiety whenever you hear dengue? Yeah, we have started receiving a few answers. What would happen to us? Very good. Thank you, Dhyana ma'am. हमें क्या होगा? Hospital admission, hospital admit आइटोना, इधर dangerous disease है. Yes, thank you, Hema Malini ma'am and Sailaja ma'am. Yes, Miss Anita, body pain, very true, right? So these are a few fears. Low platelet count, very true, Subhashri. When will I become normal? Yes, very true, Jayalakshmi ma'am. So will it spread to everyone around me? Yes, especially my family, right? We are very concerned what if it comes to my child or what if it comes to my family? Very true, very true. So whatever you have given as an answer is what I have also written in this slide. What if this Yeah, as ma'am joins, like, so these are the fear and anxieties. So that's what ma'am is explaining. Am I audible? Yes, ma'am, you are. Yeah. So, yeah, ma'am has joined back. Sorry, ma'am. We lost you in between, ma'am. Please continue. Yes, ma'am. I think ma'am is still, ma'am, we lost you in between, Neha, ma'am. Okay, I'm sorry, ma'am. I'm sorry. I'll just share the screen again. Just a minute. So since we are going multilingual, the time is getting delayed. But I would request all the participants, now moonu language liyum pesradala, it's like getting delayed. But after this, we'll have an interaction as well. So I request all the participants to wait. Thank you. So இந்த எல்லா பயமுமே நம்மளுக்கு இருக்கும். So அந்த பயத்தெல்லாம் நீங்க சொன்ன பயத்தை தான் நானும் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். जो भी आपने कहा था उसी को लिस्ट किया है मैंने. तो ये डर जो है ये किस तरीके से हमारे शरीर के इम्यूनिटी को कम करता है? How does this fear decreases our immunity shown in this slide? When we get stressed because of fear or anxiety, heart rate increases, blood pressure increases, stress hormones and immune system are suppressed by cortisoids and digestive system is affected. Stress nala heart rate BP increase ஆகும். cortisoidங்கிற ஹார்மோன் வந்து நம்ம மத்த இம்யூன் சிஸ்டம்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணும் एंड நம்மளோட डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट आइடும். सो स्ट्रेस की वजह से हार्ट रेट ब्लड प्रेशर ये बढ़ जाता है. हमारे
कॉर्टिसोल नाम के एक हार्मोन आके हमारे बाकी के इम्यून रोग प्रतिकारक शक्ति वाले हार्मोन्स को कम कर देता है और हमारी पाचन शक्ति अफेक्ट हो जाती है। तो इससे हम कैसे साइकोलॉजिकली जूझें? हाउ कैन वी ओवरकम दिस साइकोलॉजिकली? फॉर दैट यू रिक्वायर द डोज. These four hormones in the body are called as the happy hormones. इसे खुशी के hormones कहा जाता है, संतोष hormones. Okay, dopamine, serotonin, dopamine, oxytocin, serotonin, and endorphins. DOSE. Okay, when these are there in our body a lot, okay, it relaxes our brain and body. It leads to better functioning of our endocrine system, that is, which secretes the hormone and our nervous system, which in turn results in better regulation of hormones, neurotransmitters, and signaling proteins between the organs. This fastens the message cascade system, which in turn activates the T cells, the B cells, the macrophages, which are your immune cells, and thus increases our immunity. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த ஹார்மோன்ஸ்னால நம்ம பிரெயின் ரிலாக்ஸ் ஆகுது, பாடி ரிலாக்ஸ் ஆகுது. அதனால நம்ம பிரெயின்க்கு ஒரு எண்டோக்ரைன் சிஸ்டமோட மெயின் ஆர்கன் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் இருக்கு, அதுவும் நர்வஸ் சிஸ்டமும் ரிலாக்ஸ் ஆகுது. இதனால என்ன ஆகுது, பிளட் த்ரூ ஹார்மோன்ஸ் இல்ல நர்வஸ் சிஸ்டம் த்ரூ நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் இல்ல ப்ரோட்டீன்ஸ், சிக்னலிங் ப்ரோட்டீன்ஸ், இதெல்லாம் ஒரு ஆர்கன் டு இன்னொரு ஆர்கன் ஃபாஸ்டா போக முடியாது. அதனால என்ன ஆகுது, எந்த ஹார்மோன் எந்த ஆர்கன்ல மெயின்லி அந்த இது ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கோ, டிசீஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கோ, அது மட்டும் யுவர் டி செல்ஸ், மேக்ரோஃபாஜஸ், தீஸ் ஆர் தி आर्मी ऑफ आवर बॉडी, அது इमीडिएटली அங்க போய் इट कैन फाइट द वायरस. तो यूजुअली क्या होता है कि जब ये हार्मोन्स हमारे शरीर में, डोज हार्मोन्स हमारे शरीर में ज्यादा होते हैं, तो हमारा जो दिमाग है और शरीर है वो एकदम रिलैक्स हो जाता है. हमारे जो एंडोक्राइन माने हमारे दिमाग में नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड करके एक ग्लैंड है, एक छोटा सा अंग है, उससे हार्मोन्स निकलते हैं और हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो आके एकदम अच्छे से काम करना शुरू करते हैं. जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, मतलब नर्व्स के बीच में जाने वाले चीजें और सिग्नलिंग प्रोटीन्स ये आके एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में खून द्वारा या नर्वस सिस्टम के द्वारा जल्दी जल्दी जाते हैं. जिसकी वजह से क्या होता है, अगर किसी एक ऑर्गन में वो बीमारी शुरू हुई है तो उस ऑर्गन में बाकी के शरीर से जितने भी आपके टी सेल्स, बी सेल्स, मैक्रोफाजेस, जिसे हमारे शरीर के सैनिक कहा जाता है, जो हमारे इम्यूनिटी के मेन अंग हैं, वो यहाँ पे जल्दी से आते हैं और हमें उस बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं. तो इन डोपामाइन, सेरोटोनिन, इन सबको हम कैसे बढ़ाएं? सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए आप गाना सुन सकते हैं. डोपामाइन को बढ़ाने के लिए आप आके dance, singing, this all works well for increasing dopamine. For serotonin, it is more related to your relaxation. So breathing, meditation, वो सब serotonin increase पढ़ने help पढ़नो. Oxytocin का है, it's the love hormone. So love hormone ना hugging will help you increase it, and the other things like talking to your loved one, holding hands, all these things will help you increase oxytocin and oxytocin. Endorphins, to increase it, exercise is necessary. Okay, so how to prevent dengue? So first is, how can I overcome this fear? In the fear है ना, வந்து எப்படி overcome பண்ணலாம், इस डर से मैं कैसे बाहर निकलूं? उसके लिए सबसे पहले है सही जानकारी. आपको आके पहले तो जानकारी होनी चाहिए कि ये डेंगू क्या है. तो हमें पूरा होप है दैट आज के इस वेबिनार से आपको एक आइडिया आया होगा व्हाट इज डेंगू एंड हाउ टू प्रिवेंट इट. इन द डेंगू நம்மளுக்கு ஃபியர் இருக்கிறதுக்கு மெயின் காரணம் நம்மளுக்கு டெங்குனா என்னன்னு தெரியாதே இருக்கு. ஸோ இந்த ஃபியரை ஓவர் கம் பண்ணறதுக்கு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் டெங்குனா என்ன. அண்ட் வி ஹோப் தட் ஆஃப்டர் டுடேஸ் வெபினார் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் தட் வாட் டெங்கு இஸ். ஓகே, அண்ட் ஒரு வாட்டி அது தெரிஞ்சுட்டானா அதை எப்படி நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், அதுக்கு என்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கலாம், தட் வி ஷுட் பி வெரி வெல் அவேர் ஆஃப். ஓகே, பட் you should not get this information from any source. Get it only from reliable source. இப்பெல்லாம் நிறைய வாட்ஸ்அப் யூனிவர்சிட்டி இருக்கு. there are lots of Google University. ஏதானும் ஆச்சுன்னா நம்ம immediately Google பண்றோம். if anything is the problem, we just Google as to what is this, and Google will give you the worst outcome. Google हमेशा आपको कभी भी कोई भी सिम्टम दिखाई देते हैं तो तुरंत हम लोग गूगल करते हैं. तो गूगल आपको एकदम
डायरेक्ट बड़े से बड़ी बीमारी का नाम बता देगा, कैंसर बता देगा, ट्यूमर बता देगा, and it will lead to fear, right? So you need to get it from reliable sources. So you have reliable sources like WHO, Center for Disease Control and Prevention, that is CDC, and you also definitely have us. You can also ask us if you have any doubts related to these diseases, and we are more than welcome to help you. अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है कि ये बीमारी कैसे काम करती है, क्या है, कैसे हम इससे बचें, हमारी टीम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है. நீங்க எப்போ வேணுமோ எங்க டீமை வந்து ஃபார் எனி மெடிக்கல் கைடன்ஸ் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். So focus on preventive measures. Eliminate standing. So first is fear நீங்க overcome பண்ணிட்டீங்களா? செகண்ட் இஸ் இதை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். ப்ரிவென்ட் பண்ணறதுக்கு முதல்ல எங்க தண்ணி தேங்கி இருக்கோ அந்த தண்ணி எல்லாம் எடுங்க. உங்க பில்டிங் பக்கத்துல, உங்க வீட்டுல, உங்க காலனில ஏதாவது ஸ்பெசிபிக் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. பிகாஸ் these standing waters are the breeding ground for मस्कीटो. सो काइंडली एलिमिनेट स्टैंडिंग वाटर. अगर आपके घर के पास, आपके कॉलोनी में कहीं पे भी अगर पानी है जो ठहरा हुआ है, जा नहीं रहा है, खासकर ये बारिश के मौसम में, तो उसे सबसे पहले अपने बिल्डिंग वालों के साथ, सोसाइटी वालों के साथ या कॉलोनी वालों के साथ उसे एलिमिनेट करें, उसे वहां से निकालें. नेक्स्ट, मच्छरदानियों का इस्तेमाल करें, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करें. यूज मॉस्किटो नेट्स, मॉस्किटो रेपेलेंट्स. यू कैन ऑल्सो यूज द नेचुरल रेपेलेंट्स दैट डॉक्टर अमुदा सजेस्टेड. एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, मतलब ये बारिश के मौसम में खासकर जब डेंगू काफी फैलता है तो पूरे हाथ का कपड़ा पहने और लाइट कलर्ड कपड़ा पहने. इससे मच्छर आपकी तरफ कम अट्रैक्ट होते हैं. ஸோ இந்த டெங்கு இப்போ இவ்வளவு பரவற டயத்துல, எஸ்பெஷலி இந்த ரெய்னி சீசன்ல, மழை காலத்துல நிறைய பரவும். ஸோ அந்த டயத்துல உங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து லூஸ் க்ளோத்திங்கா இருக்கணும், லாங் ஃபுல்லா கவர் பண்ற மாதிரி க்ளோதிங்கா இருக்கணும், லைட் கலரோட க்ளோத்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ஸோ தட் ஐ நோ மழை காலத்துல லைட் கலர் இஸ் டிஃபிகல்ட், பட் ஸ்டில் if you wear that, and the mosquito will not get attracted to you. Next is use mosquito repellents and maintain basic hygiene. Daily cooling, take bath every day, brush every day. Maintaining hygiene itself will not give out lots of carbon dioxide from your skin, which in turn will not attract mosquitoes. In fact, there's a research which says that mosquitoes are attracted towards carbon dioxide. So if you take bath regularly, like twice a day, and brush your teeth and maintain your basic hygiene, mosquitoes will not be attracted to you. So for mosquitoes, mosquito உங்கள்ட்ட அட்ராக்ட் ஆகாத இருக்கிறதுக்கு டெய்லி குளிங்க, பல்லு தேங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம பாடியில இருந்து, ஸ்கின்ல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளில ஜாஸ்தி வராது. ஸோ மஸ்கிட்டோ வந்து அதுகிட்ட ஜாஸ்தி अट्रैक्ट आहाது. तो मच्छर को अपने से दूर भगाना है तो बेसिक हाइजीन का इस्तेमाल, बेसिक हाइजीन मेंटेन करें. रोज नहाएं, 2 बार हो सके तो नहाएं, ब्रश करें, बाल अच्छे से बनाएं. इससे मच्छर हमारे तरफ ज्यादा आकर्षित नहीं होते हैं. And these preventive measures have to be followed every day. எப்போதுமே இது பார்க்கணும். ஒரு நாளோ 2 நாளோ பண்ணதுனால ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகாது. You have ये सारी practices आपको रोज करनी है. And limit your exposure to fear inducing media. Third, once this இந்த ஒரு டெங்கு ஒரு வாட்டி வந்துடுதுன்னா, தி ஹோல் மீடியா இஸ் அபவுட், ஓ இங்க இவ்வளவு பேருக்கு டெங்கு ஆயிடுது, இந்த ஏரியால இவ்வளவு பேருக்கு டெங்கு ஆயிடுது, அண்ட் அதனாலேயே நம்மளுக்கு பாதி பயம் வர ஆரம்பிச்சுடுறது. राइट. सो जब ये डेंगू वगैरह फैलता है तो आप देखेंगे न्यूज में हर बार, हाँ यहाँ पे इतने लोगों को डेंगू हुआ है, इतने लोगों की डेंगू से मौत हो गई है, ये हो गया, वो हो गया. ये सारी बातें सुन के ही हम लोगों को डर आने लगता है ना. सो ऐसे समय पे अवॉइड फियर इंड्यूसिंग मीडिया. अच्छे वाले நியூஸ் देखिए, வாட்ச் நியூஸ் தட் ஆர் பாசிட்டிவ். எதால நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்குமோ அந்த மாதிரி நியூஸ் பாருங்க. மத்த நியூஸ் எல்லாம் எவ்வளவு முடியுமோ அவாய்ட் பண்ணுங்க. டெத்தை பத்தி, சீசனல் த்ரெட்டை பத்தி, எவ்வளவு பேருக்கு ஆயிருக்கு, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு எதுவும் நம்ம வந்து எக்ஸாம் கொடுக்க போறது இல்ல, யூபிஎஸ்சி எம்பிஎஸ்சில கூட இதெல்லாம் கேட்க போறது இல்ல. வை வாட்ச் திஸ் அண்ட் கெட் இன்டு ஃபியர், right? And challenge your worst case scenario. Whenever we are facing with a disease, even during COVID, we found this to be very common, is that we imagine a worst case scenario. Oh my God, now I'm going to get dengue. Oh my God, I'll get symptoms. I'll get hospitalized. I'll get into ICU. Oh my God, my family will suffer. Worst case scenario, right? நம்மளுக்கு இப்ப இது கோவிட் போது நீங்க பாத்திருப்பீங்க, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டிசீஸ் வருதுன்னா அந்த டயத்துல
இமேஜின் தி வேர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ. அப்படின்னா எவ்வளவு தப்பா நெகட்டிவா யோசிக்க முடியுமோ அவ்வளவு நெகட்டிவா யோசிப்போம். ஐயோ எனக்கு டெங்கு ஆயிடும், டெங்கு ஆனவனு என்ன ஆகும், என் ஃபேமிலிக்கு வந்துடும், நாங்க எல்லாருமே ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆயிடுவோம், நான் ஐசியூல போயிடுவேன், என் முழு குடும்பமே என்னால கஷ்டப்படுவோம், அப்படியே யோசிச்சுட்டே போயிடுவோம், ரைட்? तो जब ये डेंगू इतना फैल रहा है तो हम सबके मन में एक डर आता है. ये कोविड के टाइम में भी हुआ था कि हम आके ना बुरे से बुरा सोच लेते हैं, इतना बुरा सोचते हैं कि क्या बताएं. जैसे कि अब मुझे डेंगू हो जाएगा, मेरी वजह से मेरे परिवार को भी हो जाएगा, हम सब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, हॉस्पिटल से मुझे आईसीयू में ले जाएंगे, मेरा परिवार मेरे वजह से सफर करेगा, सबको परेशानी होगी. इस तरीके से सबसे बुरे से बुरा सोचना शुरू कर देते हैं. सो इसे ओवरकम कैसे करें? हाउ टू ओवरकम दिस? First is get the facts. Not everyone who get dengue are going into ICU. I mean, when you have such fear, worst fear, challenge the fear. Is this true? இது நிஜத்துல நடக்குமா? First ஒரு challenge பண்ணுங்க. पहले challenge कीजिए, ये होगा क्या? Do all the people who suffer from dengue reach the ICU? No. अगर ऐसा होगा तो where is the evidence? இப்படி நடக்கும்னு நம்ம மனசு சொல்லறது இல்ல, அதுகிட்ட கேளுங்க, எவிடன்ஸ் எங்க இருக்கு? Where is the evidence? Ask your mind. Do you have any evidence? Right? Go in for scientific evidence, facts. And how much chances are there that you will get dengue? See, நம்ம இவ்வளவு வேர்ஸ்டா யோசிச்சதுக்கு எவ்வளவு பெர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு டெங்கு ஆகும்? நம்ம அக்கம் பக்கத்துல ஏரியால யாருக்கும் டெங்கு ஆகலன்னா நம்மளுக்கு டெங்கு ஆகிற சான்சஸ் only 20%. If no one in my nearby area has, in my colony, in my society has dengue, that means I getting dengue is close to 10 to 20% chance. राइट? सो व्हाई शुड आई फियर? अगर मेरे एरिया में किसी को डेंगू नहीं हुआ है तो मुझे घबराने वाली क्या बात है? तो मुझे डेंगू होने के चांसेस बस 10 या 20% है, विच इज वेरी वेरी लेस. तो मैं क्यों चिंता करूं? If there are people who have dengue, then what preventive measures should I take? Say suppose, okay, இல்ல நம்ம ஏரியால நிறைய டெங்கு இருக்கு, in my area lots of dengue cases are there, so what should I do? So start with the precautions, start solving the problem. என்னென்ன precautions? இப்போ அமுதா மேம் எவ்வளவு precautions சொன்னாங்க, பிரீத்தி மேம் எவ்வளவு precautions சொன்னாங்க, சில precautions நானும் சொன்னேன், அது எடுக்க ஆரம்பிங்க, அந்த measures எடுக்க ஆரம்பிங்க, and reduce the chances of getting dengue or any disease for that matter. तो ठीक है, अगर आपने कहा नहीं नहीं मैडम मेरे एरिया में तो काफी डेंगू है तो मुझे भी होने के चांस है, तो होने के चांस है तो तुरंत जाके क्या करें जिससे हम इसे कम कर सकते हैं? हमने इतने सारे तरीके बताए, अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाइए, कुछ चीजें कीजिए जैसे पानी हटाना, कपड़े किस तरीके से पहनना, ये सब करके खुद को कैसे बचाएं और कम से कम डेंगू आने के चांसेस रखें, इस पे काम कीजिए. और most important is mindfulness. Dr. Amuda was also speaking about mindfulness. What is within our control is only the thing that we can worry about, right? So there are a few things which are under my control. Other things are out of my control. What things can I control? What precautions can I take for my family? How do I dress up? How do I keep my house clean, right? These are things in my control. How can I suggest to the society what measures they should take? These are things under my control. But things like what is the government doing? The number of mosquitoes are increasing. I suggested yet they are not doing anything. My neighbors and friends are very careless. These are not under my control, right? இப்போ இந்த டெங்கும் போது இந்த இல்ல எனி பயம் எனி இது வரும்போது மைண்ட்ஃபுல்னஸ் பிராக்டிஸ் பண்றது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மைண்ட்ஃபுல்னஸ்னா என்ன? எந்த விஷயங்கள் என் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு, எந்த விஷயங்கள் என் கண்ட்ரோலோட வெளியில இருக்கு. என் கண்ட்ரோல்ல இருக்குன்னா நான் என்ன பண்ண முடியும்? இந்த டெங்கு என் ஃபேமிலிக்கு வராத இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம்? நான் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம்? நான் என் வீட்டை எப்படி கிளீனா வச்சுக்கலாம்? என் ஏரியால நான் என்ன பண்ணலாங்கிறது சஜஸ்ட் பண்ணலாம். இதெல்லாம் என் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. எது என் கண்ட்ரோல்ல இல்ல? நான் சஜஸ்ட் பண்ண அப்புறமா எதுவும் எடுத்துக்கலையா? என் கண்ட்ரோல்ல இல்ல. சஜஸ்ட் பண்றது மட்டும்தான் என் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. எவ்வளவு மஸ்கிட்டோஸ் இருக்கு, இல்ல கவர்மெண்ட் எதுவுமே பண்ணல, இல்ல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெய்பர்ஸ் எல்லாம் கேர்லெஸ்ஸா இருக்கா, இதெல்லாம் என் கண்ட்ரோல்ல இல்ல. सो जब हम ये डेंगू या किसी भी तरह की बीमारी से हम लोग जूझते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कुछ चीजें ये हमारे वश में है और कुछ चीजें ये हमारे वश में नहीं है. तो जो चीजें मेरे वश में है मैं उसी के बारे में चिंता करूं. आई शुड वरी अबाउट थिंग्स दैट आर अंडर माई कंट्रोल.
நான் எது என் கண்ட்ரோல்ல இருக்கோ அதை பத்தி தான் நான் யோசிக்கணும், மத்தத பத்தி யோசிச்சு टेंशन எடுத்து இந்த यूज़फुल है, राइट? तो ये कौन सी चीजें हैं जो मेरे वश में है कि मैं सावधानी कैसे बरतूं, कपड़े कैसे पहनूं, अपने परिवार का ख्याल कैसे रखूं, घर कैसे साफ रखूं, अपने बिल्डिंग सोसाइटी या कॉलोनी को कैसे साफ रखूं, इसके लिए मैं सिर्फ सुझाव दे सकती हूँ। उसके लिए बिल्डिंग कॉलोनी के लिए अपने घर तक मेरे कंट्रोल में है, सुझाव दे सकती हूँ। लेकिन एक बार वो सुझाव दे दिया तो वो उसे कैसे लेते हैं, अमल करते हैं, नहीं करते हैं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। कितने मच्छर हैं ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर रही है ये मेरे वश में नहीं है। मेरे नेबर्स अगर केयरलेस हैं, मेरे दोस्त केयरलेस हैं, तो वो मेरे वश में नहीं है। तो जो चीजें, things which are under my control, we should only worry about those things and take action for those things. Things which are not in my control, I should not worry or get anxious about them. अगर आपको ऐसे ही काफी सारे डर सता रहे हैं तो बेहतर है कि आप एक किताब में लिख लें कौन कौन सी चीजें आपको डरा रही है। उससे आपको एक आइडिया आएगा कि आपका दिमाग किस तरीके से चलता है और आप फिर उसे काफी आसानी से टैकल कर सकते हैं। அடிக்கடி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பயம் வருது, இது எப்படி பண்ணலாம், அது எப்படி பண்ணலாம், ஐயோ இந்த பயம் வருது, இந்த பயம் வருதுன்னா ஒரு புக்ல எழுதுங்க என்னென்ன பயம் இருக்குன்னு. எழுத உங்களுக்கு புரிய வரும். நிறைய ரிப்பீட்டட் பயமா இருக்கும். ஒரு பேட்டர்ன் புரிய வரும். அந்த பேட்டர்னை புரிஞ்ச உடனே யூ கேன் ஈஸிலி help overcome it. So keeping a journal of the various triggers that gives you this fear, this anxiety, this tension. If you maintain a journal of it, you yourself will observe that how many of these are repeated, how many of these are similar. You'll identify a pattern and thus you can work on it. And building resilience. That is, if, okay, whether I'm going to get dengue, I'm not going to get dengue, I don't. But keeping a plan ready, keeping the contacts of our nearest medical centers ready, asking our doctors what medicine should be kept handy. You can also ask us, we will be more than willing to help you. So if you have this plan, it is like building a resilience. You are prepared. Even if you get it, you don't get it. If you are prepared, that itself will keep your mind at ease. Building resilience na ipo என்னெல்லாம் பண்ணலாம். நீங்க வந்து சரி இப்போ டெங்கு வந்ததுன்னா வரப்போறதா இல்லையா நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனா வந்ததுன்னா நான் என்னென்ன பண்ணலாம், எது என்னோட பக்கத்து ஹாஸ்பிட்டல், என் டாக்டர்கிட்ட இருந்து என்னென்ன மருந்து வீட்டுல வாங்கி வச்சுக்கணும், என்னென்ன ப்ரிவென்டிவ் மெஷர் பண்ணணும், என்னென்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கு, இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. தட் இட் செல்ஃப் நம்மளோட மைண்டுக்கு கொஞ்சம் டென்ஷன் கம்மியா கொடுக்கும். தட் இஸ் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கும், டென்ஷன் கம்மியாகும் தானே. तो रेजिलियंस बिल्ड करना मतलब अल्टरनेटिव्स, मतलब अगर हमें पता नहीं हमें डेंगू आएगा नहीं आएगा, हमें पता नहीं, लेकिन आपके पास अगर एक जानकारी हो कि मेरे बाजू में हॉस्पिटल्स कौन से हैं, मैंने कौन कौन सी दवाइयां अपने घर में रखना है अगर मुझे डेंगू जैसे सिम्टम्स होते हैं, ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं, ये सब अगर आप जान के रखेंगे, अपने पास शोध करके रखेंगे, तो अगर हो भी जाता है तो हम इसके लिए प्रिपेयर्ड है। तो उस समय में हमारा जो मन है वो थोड़ा शांत रहता है, हमारे मन को लगता है ठीक है, देयर इज अ प्लान एंड आई कैन ऑलवेज वर्क ऑन इट, राइट? एंड मेन थिंग इज स्लीप. Okay, if we don't have enough sleep, okay, what happens is in our body it reduces the pro-inflammatory cytokines, which are the main that is they help form the T cells and the B cells, okay, or the cytokines. So then our immunity will not work properly. Okay, so sleep is very, very, very important. A good amount of sleep will increase the pro-inflammatory cytokines, which will trigger the T cells to form in lot of numbers, and then our immune system will fight against the virus. இப்போ தூக்கம் நிறைய இல்லைன்னா நம்ம பாடியில ப்ரோ இன்ஃபிளமேட்டரி சைட்டோகைன்ங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து கம்மியாயிடும். கம்மியானா அது வந்து டி செல்ஸ் சைட்டோகைன்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. எதனால? இந்த ஆர்மி, நம்ம பாடியோட ஆர்மின்னு சொல்றோம்ல, அது கம்மியாயிடும். சோ அது ஆகாத இருக்கிறதுக்கு இஃப் யூ கெட் குட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்லீப், நல்ல தூக்கம், ஒரு 8 hours 6 to 8 hours ஓட தூக்கம் இருந்ததுன்னா உங்க பாடியில ப்ரோ இன்ஃபிளமேட்டரி சைட்டோகைன்ஸ் நிறைய இருக்கும். அது நிறைய இருந்தானக்கு உங்க பாடியில நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ், टी सेल्स இதெல்லாம் ஃபாஸ்டா ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் பாடியோட ஆர்மி ஆஃப் டு ஃபைட் अगेंस्ट दिस वायरस அது நிறைய இருக்கும். तो अगर आप पर्याप्त नींद लें,
6 से 8 घंटे का, तो आपके शरीर में प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस ये काफी मात्रा में हो जाते हैं। जब ये ज्यादा होते हैं तभी हमारे बॉडी में ये टी सेल, बी सेल, माइक्रोफाजस ये सब काफी बनते हैं। और हमारे शरीर का जो ये आर्मी है, जो ये सैनिक है, टी सेल्स के, बी सेल्स, इनके रूप में वो जाके इस वायरस से लड़ पाते हैं। लेकिन अगर नींद कम होती है तो ये सारी चीजें कम हो जाती है और बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। और इसके अलावा हॉबीज रहना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे जो पहले कहा था डोज हार्मोन्स उसे बढ़ाते हैं, राइट। उसी तरीके से मेडिटेशन और एक रूटीन के होने से डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स हमारे शरीर में बढ़ते हैं। इफ वी हैव hobbies, it gives us happiness. If we do meditation, it gives us happiness. Doing a routine gives us happiness. If these happiness are there, our happy hormones increase. When our happy hormones increase, at that time our immunity naturally increases. So do have hobbies, do have all these routines and everything. நம்ம உடம்புல இம்யூனிட்டி நேச்சுரலா இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு ஹாபிஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க, மெடிடேஷன் பண்ணுங்க, ஒரு ருட்டீன் வச்சுக்கோங்க. இதனால என்ன ஆகும்னா, பிகினிங்ல சொன்னோம்ல அந்த 4 ஹார்மோன் டோபமைன், ஆக்சிடோசின், செரோட்டோனின் அண்ட் என்டார்பின்ஸ், இது வந்து நிறைய இருக்கும். இது பாடியில நிறைய ஆக ஆக நம்மளோட இம்யூனிட்டியும் பெட்டர் ஆகும். தி ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் அது இன்க்ரீஸ் ஆகும் இஃப் வி ஆர் ஹாப்பி, அண்ட் தீஸ் திங்ஸ் கிவ் அஸ் happiness. And the main thing is take care of yourself, prioritize yourself. If you don't prioritize yourself, nothing will work out. If you are not healthy, you will not be able to take care of your family. உங்க ஹெல்த் முதல்ல முக்கியம், அப்போதான் உங்க ஃபேமிலியை நீங்க பாத்துக்க முடியும். அதுக்காக प्रायोरिटाइज योरसेल्फ. अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप दूसरों पे केवल बोझ बनेंगे, आप उनका ख्याल नहीं रख पाएंगे. तो इसीलिए अपने आप को पहले, अपने बारे में पहले सोचना इसमें गलत नहीं है. And last is, what will we do if we get dengue? டெங்கு வந்து என்ன பண்ணலாம், அது ஆல்ரெடி அமுதா மேமும் சொல்லியிருக்காங்க, பிரீத்தி மேமும் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணலாம் சைக்கலாஜிக்கலி? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் டெங்கு நம்மளுக்கு வந்த அப்புறம் சில ஹெல்தி டைவர்ஷன்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஹெல்தி டைவர்ஷன்ஸ் தான் மொபைல் பாக்குறது, டிவி பாக்குறது, மூவிஸ் பாக்குறது இல்ல. ஹெல்தி டைவர்ஷன்ஸ்னா ஏதான ஒரு புக்கை ரீட் பண்றது, பாட்டை கேட்கறது, பிரேயர்ஸை சாண்ட் பண்றது, நம்மளோட வெல்விஷர்ஸோட பேசுறது, எக்ஸசைஸ் பண்றது. These are all healthy diversions. Okay, and these diversions will help us cope better. अगर डेंगू होता है तो सबसे पहले, ठीक है, डेंगू के समय क्या करना है ये ऑलरेडी अमुदा मैम और प्रीति मैम ने बताया है. लेकिन हम एक साइकोलॉजी के तौर से देखें तो कुछ मन का ध्यान भटाने के लिए कुछ अच्छी आदतें, हम लोग यूजुअली ध्यान भटाना है तो मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं. लेकिन कुछ अच्छी आदतें होती है, जैसे कि किताबें पढ़ना. जब हमें डेंगू है उस समय मोबाइल देखने की जगह किताबें पढ़ सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, मंत्र वगैरह जाप कर सकते हैं, अपने प्रियजनों से बात कर सकते हैं. छोटी छोटी एक्सरसाइजेस जैसे जो अमुदा मैम ने बताए, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस वो कर सकते हैं. The next one is, have a loose routine. During dengue time, when we are suffering from dengue, we usually are bedridden all the time. So rather than that, have basic routine like get up, go brush your own teeth, go get your own food, put back your plate on the sink, take a bath, wear clean clothes. So practice these basic things. It will also keep your mood fresh, thus increasing the happy hormones. So in the dengue இருக்கும்போது நம்ம யூஸ்வலி பெட்ல படுத்த படுக்கையாவே இருப்போம். அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. சில லூஸ் ரூட்டீன் வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்க பாடியில ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். லைக் தானே தன் பெட்ல இருந்து எஞ்சி தன் பல்ல தேய்க்கிறது, தானே தன் சாப்பாடு எடுத்துன்னு வந்து சாப்பிடுறது, பிளேட்டை திருப்பி சிங்க்ல போடுறது, அப்புறம் என்ன சொல்லுவோம், குளிக்கிறது, கிளீன் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறது இஸ் அ வெரி குड हैबिट which we should do even if we are suffering from dengue. डेंगू हो जाता है तो हम लोग हर बार सिर्फ बेड में ही रहते हैं, हम और कोई काम नहीं करते हैं. तो उस समय ऐसे न करते हुए अगर कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस जैसे ब्रश करना, खुद का खाना खुद लेना, वापस प्लेट को धोकर रखना, नहाना, अच्छे कपड़े पहनना, अगर इस तरीके की बेसिक रूटीन हम फॉलो करें तो इससे हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स बढ़ते हैं. और हैप्पी हॉर्मोन्स बढ़ने की वजह से हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है. और सबसे लास्ट, अपने शरीर पर भरोसा रखें. ट्रस्ट योर बॉडी.
योर अगर आपका शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डरने वाली बात नहीं है। आपका शरीर उस रोग से लड़ रहा है, उस वायरस से लड़ रहा है। तो उसे सपोर्ट करने के लिए क्या क्या करना है, जो डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस बताए हैं, जो खाना क्या खाना है, पानी कैसे पीना है, आराम कैसे करना है, जो भी हमने बताया उस पर ध्यान दें। So நம்ம உடம்புக்கு லாஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் திங் இஸ் அதை ட்ரஸ்ட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒரு டெங்குவோ இல்ல எனி ஃபீவர் வரும்போதோ இல்ல டிசீஸ் வரும்போதோ நம்ம பாடிக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும். அது மேல முழு ட்ரஸ்ட், முழு நம்பிக்கையும் வைக்கணும். இப்ப நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் ஏறுறதுன்னா டென்ஷன் எடுத்துக்க வேண்டாம். அப்படின்னா நம்ம பாடி வந்து ஏதோ ஒரு வைரஸையோ பாக்டீரியாவையோ ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கு, அதுக்காக அது பாடி டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்றது. ஸோ அந்த டயத்துல டென்ஷன் எடுத்துக்கிற இடத்துல நம்ம அதை சப்போர்ட் எப்படி பண்ணலாம், என்னென்ன சாப்பிடலாம், என்னென்ன ப்ரிவென்ஷன் பண்ணலாம், எவ்வளவு தண்ணி குடிக்கலாம், என்ன மருந்து சாப்பிடலாங்கிறது அந்த ரெக்கவரி ப்ராசஸ் மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. Trust your body. This is the mantra today we all will take home. Because whenever we get any disease, our body knows the best as to how to overcome it. It will increase the body temperature, it will start vomiting and all to remove all the toxins. So trust your body, and when these things happen, support your body by eating the right food, by giving the required medicines, by taking the enough amount of rest and water. Okay, so these are the few things that we can do, and these are our helpline numbers. You can always contact us and we would guide you further. Over to you, Preeti ma'am. Yeah, we are open for questions. Would request anybody to have. I know we have exceeded the time. We're very sorry, but we wanted to go multilingual. மூணு லாங்குவேஜ்லயும் பேசினதால அந்த மாதிரி டைம் ஆச்சு. ஸோ we would request you to ask any questions. இந்த கவர் ஆகாத ஏதாவது கொஸ்டின்ஸோ இல்லை கமெண்ட்ஸோ உங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும்னு இஷ்டம் இருந்தா ப்ளீஸ் tell us. You can also type in the chat box. இல்ல அன்மியூட் பண்ணி சொல்லலாம். We are also giving our helpline numbers. Dengue இல்ல எந்த any problem, any medical guidance, any psychological counseling needed, or any naturopathy queries for holistic approaches, you can contact our helplines. நாங்க இந்த மெடிக்கல் கைடன்ஸ், மைண்ட் கேர், நேச்சுரோபதி எல்லாமே வந்து ஒரு இன்டகிரேட்டடாக தான் எங்களோட கைடன்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி சைக்கலாஜிக்கல் கவுன்சிலிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இட்ஸ் ஃப்ரீ. For people who cannot afford also, we'll be able to waive the fee. So don't hesitate to contact us for any kind of medical help or psychological guidance or naturopathy queries. We also have our regular yoga classes happening online and offline. Dr. Amuda சொன்ன மாதிரி அந்த யோகா எல்லாம் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆன்லைன் அண்ட் இன்-பர்சன் கிளாஸஸ் வந்து கோபாலபுரம், முகப்பேர், Gilnagar, it's happening. And online every day, that is alternate day mornings and evenings, it's happening. So you can contact in this mobile numbers and you can join the yoga classes. மேம் வணக்கம், ஒரு டவுட் கேட்கலாமா? சொல்லுங்க சார். மேம் இப்போ ரீசெண்ட் டேஸ் வந்து கொரோனா போன்ற கொஞ்சம் அது மாதிரியான இது கூட நம்ம வேக்சின்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. பட் டெங்கு பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டெத் ரேட் அதிகமாக இருக்கு. பட் இது வரைக்கும் நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்கோ வேக்சினேஷன் லெவலில் இன்னும் நம்ம போக முடியாதுக்கு ஏதாவது டிஃபிகல்டிஸ், ஏதாவது அப்டக்கிள்ஸ் இருக்கா? ஆமா, டெங்குக்கு 2 வேக்சின் உலகத்துல இருக்கு. அந்த வேக்சின்ஸ் ஆனா எங்கன்னா வெஸ்டர்ன் நேஷன்ஸ்ல அங்கே வந்து டெங்கு பரவலா இருக்காது. இந்தியா அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்க்கு, ஜிம்பாப்வே, ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்க்குலாம் வந்துட்டு போறவங்களுக்கு டெங்கு வந்து திரும்ப வேற அதே டைப் இல்லாம வேற டைப் வராம இருக்கிறதுக்கு அந்த வேக்சினை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு WHO சொல்லியிருக்கு. ஆனா வேக்சின்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி வைரல் இன்ஃபெக்ஷனுங்கிறதால அவ்வளோ எஃபெக்டிவ்னஸும் கம்மி வேக்சின்ல. அதே மாதிரி சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸும் இஷ்யூஸ் இது கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால பரவலாக அதை யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஒரு விஷயம். 2வது ஆன்டிவைரல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் சொன்ன மாதிரி வைரஸ் நம்ம செல்லுக்குள்ள போய் உட்கார்ந்து அது வேலை செய்யறதால நம்ம செல்லும் பாதிக்கப்படுங்கிறதால ஆன்டிவைரல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை. ஏன்னா ஆன்டிவைரலால
வர சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அதிகம் அந்த வைரஸை எதிர்க்கிறத விட. ஸோ இம்யூன் சிஸ்டத்தை பூஸ்ட் பண்றதா ஒரே வழி. இன்னொன்னு கவர்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க பிரேசில்லலாம்னா, இந்த மஸ்கிட்டோஸை வந்து ஸ்டெரைல் ஆக்குறாங்க. அதாவது 2 வகையில. ஒன்று வந்து ஜெனட்டிக் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி அந்த மேல் மஸ்கிட்டோஸை அவங்க அந்த வயல்ல விட்டுருவாங்க. அது ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோஸோட மேட் பண்ணும்போது அந்த ஜீன் வந்து அந்த மஸ்கிட்டோ மேலும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணாம தடுத்துரும். அந்த மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் டெக்னிக் யூஸ் பண்றாங்க. இன்னொன்னு வந்து ஸ்டெரைல் மேல் மஸ்கிட்டோஸையும் வைல்டுல விடுறாங்க. இந்த மாதிரி சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் பிரேசில்ல, சைனால எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அது இப்போதைக்கு ப்ராசஸ்ல இருக்கு. அது எவ்வளவு தூரம் வெற்றி அடையும்னு தெரியாது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த பிரசன்ட் ஸ்டேட்டஸ். பட் டெங்குக்கு வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் நல்லா பூஸ்ட் பண்ணி நம்ம டெங்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியும் வந்த அப்புறமும் நல்ல இம்யூனிட்டியை சப்போர்ட்டிவா வச்சு பூஸ்ட் பண்ணோம்னா ஈஸியா ரெக்கவர் ஆயிடலாம். இட்ஸ் பாடியே லிமிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் தான் சார். ஓகே, தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. If there are no more questions, we thank everyone for joining the webinar. Looking forward to meet you all in the next webinar. Thank you and namaste. Namaste. Thank you so much, ma'am.